Razr 60 जो कि हमारा 6th जनरेशन है फोल्डेबल डिवाइसेस का, फ्लिप फ़ोन डिवाइसेस का, और बेहतरीन डिवाइस है। बहुत सारी लर्निंग्स लेके आ रहा है हमारे पिछले 5 जनरेशन से। कंज्यूमर्स को क्या चाहिए इस फॉर्म फैक्टर में, वो सारी चीज़ें लेके आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़, ये फॉर्म फैक्टर कंज्यूमर्स के लिए एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है, एक स्टाइल स्टेटमेंट है। तो इसलिए ये जो डिवाइस है Razr 60, वो आज की डेट में एक पर्ल मार्बल फिनिश के साथ आता है, जो पहली बार देखा जाएगा इस फॉर्म फैक्टर में। फैब्रिक फिनिश के साथ आता है, जो अगेन पहली बार देखा जाएगा। सो आप इस फॉर्म फैक्टर में पहली बार ऐसे फिनिशेस देखेंगे जो कि एक अपने आप में एक स्टाइल, एक फैशन स्टेटमेंट बनाता है इस डिवाइस को। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि क्या इसको अलग करता है बाकी डिवाइसेस से, तो वो है इसकी वीडियो जेस्चर्स कैपेबिलिटी। अगर आप देखें तो ये डिवाइस जो है, क्योंकि इसका फॉर्म फैक्टर ऐसा है कि अलग अलग फॉर्म फैक्टर में कंज्यूमर्स को कंटेंट क्रिएशन के मौके देता है। अब आज की डेट में आप लोग के पास तो क्रू होता है शूट करने के लिए, लेकिन जिसके पास क्रू नहीं है वो कैसे अपना खुद का शूट करे। तो यहाँ पे बिना क्रू के लिए जो जेंजी हमारा यंग कंज्यूमर्स हैं जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए हैंड जेस्चर्स का ऑप्शन दिया गया है कि खाली हाथ के जेस्चर दिखाइए और आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। उसके थ्रू बिना क्रू के आप वीडियो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जो गो लाइव कर सकें। साथ ही साथ इसमें टॉप नॉच AI सोल्यूशंस दिए हैं जो बेस्ट इन क्लास हैं, प्रेडिक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं एंड एडवांस्ड हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कंज्यूमर्स का कंसर्न रहता था, जो ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न रहता था कि फ्लिप फोन है, फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर है, तो क्या ये लंबा चलेगा, क्या उतना चलेगा जितना हमारा रेगुलर कैंडी बार चलता है। तो इस डिवाइस में हमने वो सारी चीज़ें भी ध्यान दी है। IP48 रेटिंग के साथ आता है, मतलब पानी में भी गिर जाए तब भी चलेगा। गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन है, आउटर डिस्प्ले पे तो गिरने पे टूटना बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें 500,000 फोल्ड्स के लिए टेस्ट किया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर दिन में 100 बार भी इस फ़ोन को बंद ओपन करेगा तो ये 13.5 साल तक चलेगा। तो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी हमने इसमें भर के दी है कि कंज्यूमर को ये टेंशन नहीं हो कि क्या ये फ़ोन मेरे लिए लंबे समय तक चलेगा कि नहीं। और एक और कंसर्न कंज्यूमर्स का रहता था कि बैटरी लाइफ, क्योंकि ये फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर है तो बैटरी छोटी होती है, लेकिन इसमें हमने बैटरी भी बढ़ा दी है। 4,500 mAh की बैटरी दी है, जो कि आराम से एक दिन के ऊपर कंज्यूमर को बैटरी लाइफ देगी। तो इस तरह से हमने अपनी सारी लर्निंग्स यूज़ करी हैं जो पिछले 5 जनरेशन्स की हैं, और उसको यूज़ करते हुए इस फ़ोन को ऐसा बनाया है जो कि सारी चीज़ों को एड्रेस करता है। और साथ ही साथ हम इसको ऐसे प्राइस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जो आज की डेट में जेंजी कंज्यूमर, यंग कंज्यूमर इसको एक्सेस कर पाए। पहली बार आप देखेंगे कि फ्लिप फोन जो है अंडर 50,000 के रेट में अवेलेबल है। हमारा इसका एडवांस वर्जन भी है, अल्ट्रा वर्जन, जो कि 1 लाख रुपए का है, लेकिन ये एग्जैक्टली उसके हाफ प्राइस पर हम लेके आए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस फॉर्म फैक्टर को यूज़ करना शुरू करते हैं और अपने डेली लाइफ में, स्पेशली द यंग क्रिएटर्स, यंगस्टर्स, जो अपने लिए इस डिवाइस को एक फैशन स्टेटमेंट की तरह देखें, एक क्रिएशन का। शिवम जी, अगर बात की जाए जो भारत का एनवायरनमेंट है उस हिसाब से देखा जाता है कई बार फ़ोन गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ती है, तो उसमें किसके सारे डिवाइसेस में बहुत एडवांस काम करते हैं हीट मैनेजमेंट का, थर्मल मैनेजमेंट का। सो जिस तरह से प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, एक तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से थर्मल मैनेजमेंट है। दूसरा, इसमें हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट शीट हो गई एट्सेट्रा, जो थर्मल डिसिपेशन और हीट मैनेजमेंट में काम करता है। तो इसमें सारे वो चीज़ें देखी गई हैं कि किस तरीके से हम ये इंश्योर कर सकें कि किसी भी क्लाइमेट में, चाहे भारत का भी क्लाइमेट हो, जो कि आप जैसा कह रहे हैं कि गर्मी का मौसम भी चल रहा है, लेकिन आपको इसमें हीटिंग देखने को नहीं मिलती।
we are the number 2 in the market, and we are maintaining our position, increasing our gap to number 3. Quarter on quarter, our market shares are growing up. EMEA, we are at a 12% growth with a double-digit market share in key European Union markets. We are actually the number 3 player in Italy. PRC growth is starting to come through. We've had a record growth with the Razr. But Asia Pacific has actually led the growth for Moto globally. We've actually doubled our revenues year on year. That's how the growth has been for us, with India contributing to 80% growth and Japan 40% year on year, and that's how Asia Pacific has been growing for us. And last quarter, we were the number 4 OEM globally in terms of value, minus of China. So we are the number 4 OEM globally outside of China in terms of revenue market share. As far as India is concerned, quarter 4 results, we had an 80% growth in volume. We were one of the fastest growing brands. IDC reports our market share at 7.5%. That's been a robust growth from a year before, where we are about 4% or 4.5%, the same quarter January from March last year. So we are at a 7.5% market share. Globally, I have shown a number wherein 25% of our revenue is actually coming from edge and Razr. In India, that number is actually 50%. 50% of the business revenue is actually coming in from Razr and edge portfolio. And the consumers are actually looking at Motorola. There is a huge acceptance that's reflecting in our Google share. We're the number 3 Android brand as far as Google search is concerned in the last quarter, January from March. So that's where we are in terms of our India results. The strategy in India, what we have been doing for the last 5 years and what we'll continue to work on, is first and foremost is make for India. Understand what the Indian consumers want, build on it, listen to the consumers and build a product for the Indian consumers. So that is something we will continue to work on. The second, make in India. We have all our phones which are being sold in India are actually manufactured in India. And not just that, we are exporting out of India as well. All our manufacturing capacities has been ramping up over the last 7-8 quarters. As the demand has been growing up, we have been adding capacities. Driving with AI and design. This differentiation that we are trying to build on for the consumers. Obviously, being a lifestyle tech brand, we need to have the design, which is where the Pantone comes in, the colors come in, the material and finishes today, what you will see. This will be something which will be industry first. So this design is coming through, but then how do we make our AI? With Moto AI 2.0, what we said was, we want AI to be your companion. Most of the AI today are reactive agents. You ask questions, the agent answers back. What we are working on now is to say, how do I make Moto AI your companion? It's a kind of thing. 1218. आपका नाम मैं नहीं जानता. Mathuresh. हाँ? Mathuresh. Mathuresh. I'm sorry, Mathuresh, I made you a guinea pig. With all other agents, I have to say, hello XYZ, tell me the time. Or hello this, play this for me. Or hello this, set my alarm. Right? That's what most of the AI agents are today. I don't know his name. I looked at him and I said, can you tell me the time? He told the time to me. That's what Moto AI 2.0 as a companion is going. With the last Razr that we just launched, we launched something as look and talk. You look at the Razr, you don't have to say, hello Moto AI, tell me the time. Or you don't have to look at it and say, hello Moto AI, tell me XYZ. You just look at the phone recognizes you, it recognizes your face, it recognizes your voice, and then answers it. So it's like me driving a car, my wife is sitting next to me or my daughter is sitting next to me, and I tell her, think that yaar, Arijit ke gaane laga. Ya bacha ke gaane laga. तेरे को ये नहीं बोलना पड़ता, hello Gita, can you put some music? I don't have to say that. That's what the Moto AI as a companion for you in your life is what we are working on. So that's something which we are driving differentiation with AI and design. That's a real life case that we look for. And of course, how do we build a robust ecosystem for the consumers is what we'll be working on. With this, we have been growing in India, continue to listen to the consumers, make for the consumers, and continue to build in India. So with this, I would like to invite Shivam, our Asia Pacific Head for Marketing, to take us through the marketing pillars and the strategies. By the way, he's the one who's setting the demand with the consumers, resonates with the consumers, and then we'll take you through the things. Thank you. All right, great. Pleasure to connect with all of you again.